डेवलपमेंट ऑफ एयर आज का हमारा टॉपिक है। लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी से चैप्टर नंबर 19। आइए स्टार्ट करते हैं। इन द एडल्ट द एयर फॉर्म्स वन एनाटॉमिक यूनिट सर्विंग बोथ हियरिंग एज वेल एज इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक बात इस लाइन से रिलेटेड जो कि एक इंपॉर्टेंट मैसेज है मुझे आपको देना है। देखो, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने का जो सही तरीका है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब आप बोलेंगे यार ये सर भी क्या जो है ना नई नई चीजें लेकर के आते रहते हैं। इस वर्ड का बेसिकली मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जिस भी ऑर्गन की आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं आपको उसकी जो आफ्टर बर्थ एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि उसकी एनाटॉमी क्या है। अगर आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पता है देन यू गो बैक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दीज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ट पढ़ते हैं तो आपको अल्टीमेट पता होना चाहिए कि हार्ट में क्या क्या चीजें हैं। हार्ट में एट्रिया है, वेंट्रिकल है। इसी तरह अगर आप आई पढ़ रहे हैं तो आपको आई के एडल्ट स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि कॉर्निया क्या है, लेंस क्या है। बिल्कुल ऐसे ही एयर है। एयर का आपको पता होना चाहिए देयर इज एन एक्सटर्नल एयर, देन देयर इज अ कंडक्शन पोर्शन, द मिडल एयर एंड देन देयर इज एन इनर एयर जिसका काम हियरिंग का है बेसिकली। सो द आउटर एयर, इनर एक्सटर्नल एयर जो कि साउंड वेव्स को पुल करता है, फिर मिडल एयर जो कि कंडक्ट करता है, और फिर इनर एयर जो कि न्यूरोकेमिकली ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स को टू द ब्रेन एंड आल्सो मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। सो आपको अगर एडल्ट स्ट्रक्चर नहीं पता तो एम्ब्रियोलॉजी बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। सो फर्स्ट रीड द फाइनल एनाटॉमी। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि मेरी एनाटॉमी की एयर की एनाटॉमी की वीडियो मौजूद है, मैं करा चुका हूँ, BD 84 से हमने किया हुआ है। मैं लिंक दे देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहले भाई वो वीडियो देख लो ताकि आपको एडल्ट स्ट्रक्चर्स पता हो। यानी जब मैं बात करूँ ना कि कॉक्लिया, तो आपको मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े कि कॉक्लिया क्या होता है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि कॉक्लिया डेवलप कैसे होता है। जब मैं बात करूँ ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई तो आपको ये ना हो कि आप मेरा मुंह देख रहे हो। खैर इस वीडियो पे आप मेरा मुंह नहीं देख रहे हैं क्योंकि मैं इसमें वीडियो नहीं दिखा रहा अपनी, सिर्फ आपको मैं बुक दिखा रहा हूँ। एनीवेज, आप ये ना हो कि मैं महाभारतन कह रहा था बाय द वे, ये ना हो कि आप सिर्फ मेरा मुंह देख रहे हो कि यार ये क्या होता है ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। तो आपको पहले अगर एनाटॉमी पढ़ रखी होगी तो एम्ब्रियोलॉजी समझ में आएगी, ठीक है। सो इन द एम्ब्रियो however it develops from three distinctly different parts. So ये एक यूनिट होता है ना पूरा, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और फिर इंटरनल एयर। एडल्ट्स में ऑब्वियसली आफ्टर बर्थ दिस इज वन सिंगल यूनिट, बट अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकली बात करें तो एक्सटर्नल एयर की डेवलपमेंट डिफरेंट जगहों से है, मिडल एयर अलग से है, और ये तो तीन अलग अलग जगह है। एक्सटर्नल एयर का काम है साउंड कलेक्शन, यानी इट्स एन एंटीना। ये एंटीना की तरह है। कहाँ बनाऊं यार, जगह ही खत्म हो गई। सो दिस इज एक्सटर्नल एयर। ये एंटीना की तरह है, आपकी एयर वेव्स को कलेक्ट करता है। सो द जॉब ऑफ द एक्सटर्नल एयर इज टू कलेक्ट साउंड वेव्स। देन देयर इज अ मिडल एयर जिसका काम है कंडक्शन, कि वो साउंड वेव्स को अंदर तक पहुंचा दे। कहां तक? इंटरनल एयर तक, which actually then converts the sound waves into the nerve impulses, and it also monitors the process of equilibrium within your body. So it's a very important equilibrium organ. So air की बेसिक ये तीन parts हैं। अब हम from inside outward move करेंगे। So first we will talk about the development of the internal air, and then we will move development of the middle air, and then we'll talk about the development of the external air in the end. तो internal air again, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, क्या आपको पता है कि इंटरनल एयर की स्ट्रक्चर्स हैं क्या क्या? क्या आपको मालूम है सैक्यूल, कॉक्लिया, ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई क्या चीजें हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द एडल्ट इंटरनल एयर स्ट्रक्चर्स? आपको ये सारे एडल्ट की इंटरनल एयर स्ट्रक्चर्स मालूम है? अगर नहीं मालूम तो गो फर्स्ट रीड दोज एंड देन कम बैक टू स्टडी कि वो बनते कैसे हैं। Okay. Now the first indication of the developing air can be found in the embryo of approximately 22 days. So this is as early as 22 days. कितना चुन्ना मुन्ना से छोटा सा embryo है, but उसमें the first indication of developing air appears. और वो appear होती है as a thickening on the surface ectoderm on each side of the rhombencephalon. और ये जो थिकनिंग्स हैं ये कहलाती हैं ओटिक प्लेकॉर्ड्स। ये एक्टोडर्मल थिकनिंग्स हैं जिन्हें हम ओटिक प्लेकॉर्ड्स नाम देते हैं। अभी दिखाता हूँ डायग्राम पर। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दे इन्वेजिनेट रैपिडली, अंदर की तरफ जाती हैं। नाउ दे आर नोन एज ओटिक वेसिकल्स, या इनको हम ओटिक वेसिकल कहते हैं या इनको हम ऑडिटरी वेसिकल कहते हैं। सो एनी वन ऑफ देम, आइदर ओटिक वेसिकल और ऑडिटरी वेसिकल। ओके, सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर, सो this is the ectoderm and here comes the ectodermal thickening जिसको हम प्लेकोड कहते हैं। वो इन्वेजिनेट कर रहा है, देखिए अंदर की तरफ जा रहा है। and now this is known as otic vesicle या auditory vesicle, आप जो भी कहें इसको, is the same thing, also sometimes called otocyst. Now cells from the otocyst
यानी इस वेसिकल के जो सेल्स हैं, दे डिफरेंशिएट एंड फॉर्म अ गैंग्लियन स्ट्रक्चर, और गैंग्लियन सेल्स जो ये बनते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेटो acoustic ganglia. Statoacoustic ganglia is an important feature. इससे काफी सारे structures बनेंगे, अभी हम देखेंगे. During later development, each vesicle then divides into a ventral component that give rise to saccule and cochlear duct, a dorsal component which gives rise to atrial, semicircular canals, and endolymphatic duct. And together these epithelial structures form the membranous labyrinth. तो हो ये रहा है कि ये जो otic प्लेकॉर्ड बना, उससे ओटिक वेसिकल बना, इसके अब डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट्स बन जाएंगे. सो देयर विल बी अ डॉर्सल पोर्शन ऑफ दिस ओटिक वेसिकल एंड देयर विल बी अ वेंट्रल पोर्शन. अब ये जो डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शंस बनेंगे, these will give rise to some adult structures. तो आपको पता होना चाहिए कि adult ear में there is a saccule, a cochlear duct, atrial, semicircular canal, endolymphatic duct. These are all the structures जो हमने anatomy में discuss किए हैं. So some of them are being produced from the dorsal part of the otic vesicle. Some of them are being produced from the ventral part of the otic vesicle. Okay. Now saccule, cochlea and organs of corti, ये basically ventral components से बनते हैं. In the 6th week of development, the saccule forms a tubular outpocketing at its lower pole. This outgrowth is known as the cochlear duct. It penetrates in the surrounding mesenchyme. Embryology में एक general principle है कि जब cells या कोई organ develop हो रहा होता है, तो usually either there is a placard and invagination, जैसे एक वेसिकल या सिस्ट बनती है, या देयर इज एन आउटपॉकेटिंग, और ये जो आउटपॉकेटिंग होती है यूजुअली ये इंटरेक्ट करती है विद द सराउंडिंग सेल्स. और सराउंडिंग सेल्स कौन से होते हैं? मेसेनकाइमल सेल्स. ये मेसेनकाइमल सेल्स इंटरेक्ट करते हैं इन आउटपॉकेटिंग सेल्स के साथ और मिलजुल कर ये पूरा एक कोई ऑर्गन या स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये जनरल फॉर्मूला है हमारी बॉडी में एम्ब्रियोलॉजिकल हैंडलिंग का. यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि देयर इज एन आउटग्रोथ और उस आउटग्रोथ की पेनिट्रेशन हो रही है इन द सराउंडिंग मेसेनकाइम. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी सराउंडिंग मेसेनकाइम से डिफरेंशिएशन होकर के पूरा कॉक्लियर स्ट्रक्चर बनता है. इन द 7th वीक व्हाट हैपेंस कि सेल्स ऑफ द कॉक्लियर डक्ट डिफरेंशिएट इनटू स्पाइरल ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई that are able to transduce the sound vibrations into electrical signals to the nerve and then to the brain. A connection between the cochlear duct and the remaining portion of the saccule is maintained by a structure which is called ductus reuniens. अब ये क्या चीज है डक्टस रीयूनियंस? यहाँ आप देखें जरा, दिस इज द डायग्राम. सो ये सेक्यूल पोर्शन है. इस सेक्यूल से आप देख रहे हैं कि देयर इज एन आउट पॉकेटिंग कमिंग. ये ऐसे आउट पॉकेटिंग यहाँ निकलती हुई दिखाई है और फिर ये बाकायदा ऐसे कंप्लीट कॉक्लियर डक्ट बना देता है. एंड दिस कॉक्लियर डक्ट इज स्टिल कनेक्टेड टू द सेक्यूल बाय दिस डक्टस रीयूनियंस. सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड. लेकिन ये मामला सिर्फ इतना नहीं है. मैंने आपसे कहा कि जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है. सो द मेसेनकाइम सराउंडिंग द कॉक्लियर डक्ट soon differentiates into cartilage. So listen to this point very carefully कि एक तरफ ये कॉक्लिया यूं डेवलप हो रहा है, इसके आसपास में जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं, ये मेसेनकाइमल सेल्स एक्चुअली डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू कार्टिलेज. और इन द 10th वीक दिस कार्टिलेजिनस शेल अराउंड द कॉक्लिया undergoes vacuolization and two perilymphatic spaces are formed. और वो स्पेसेस कहलाती हैं स्काला वेस्टिबुलाई and scala tympani. They are formed. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. So look here for example. अब यहाँ सपोज ये सेक्यूल था, सेक्यूल से ये आउट पॉकेटिंग हुई और इसने ये कॉक्लिया बना दिया इस तरह से ना. सो दिस इज नाउ द कॉक्लिया. अब अगर मैं इसका सेक्शन लेकर के देखूं एंड दिस इज नाउ द ट्रांसफर सेक्शन. सो दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट द कॉक्लिया. ये कॉक्लियर डक्ट है. सो दैट्स अ सेक्शन थ्रू हियर फॉर एग्जांपल लाइक दिस. दिस इज द कॉक्लियर डक्ट और ये इस कॉक्लिया के इर्द गिर्द कार्टिलेज बन गया है. और ये कार्टिलेज एक्चुअली किस चीज से बना है? दिस कार्टिलेज इज फॉर्म्ड फ्रॉम mesenchymal structure. So this cartilage is formed from the mesenchyme. तो अब सिचुएशन ये है कि वी हैव अ कॉक्लियर डक्ट. तो कॉक्लिया है यानी ये वाली डक्ट. इसका अगर मैं यहाँ से काट के देखूंगा तो ऑब्वियसली ये मुझे ऐसे नजर आएगी ना, लाइक ए डक्ट. तो ये डक्ट है और इसके इर्द गिर्द कार्टिलेज है. अब होता ये है कि ये जो कार्टिलेज है इसमें वैक्यूलाइजेशन होती है, यानी इसमें गैप्स बनना शुरू होते हैं ऐसे. इसमें लाइक दिस वी स्टार्ट गेटिंग गैप्स लाइक दिस. ओके. अब ये जो गैप्स बनते हैं इससे दो पार्ट बनना शुरू हो गए. एक पार्ट को हम नाम देते हैं जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एक तरफ है, दिस इज नोन एज स्काला वेस्टिबुलाई, एंड द अदर वैक्यूलेटेड पार्ट इज नोन एज स्काला टिम्पेनाई. और बीच में इनके जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दैट इज नोन एज मॉड्यूलस.
सो मॉड्यूलस से स्काला टिम्पेनाई वेस्टिबुलाई एक तरफ है और स्काला टिम्पेनाई एक तरफ है, एंड हियर वी हैव दिस कॉक्लियर डक्ट। और फिर इस कॉक्लियर डक्ट में भी एम्ब्रियोलॉजिकली चेंजेस आते हैं। वो पोर्शन कॉक्लियर डक्ट का जो स्काला टिम्पेनाई की तरफ है वो इनर रेज और आउटर रेज में डिवाइड होता है, एंड ये वाला पोर्शन जो एक्चुअली दोनों स्केला के नजदीक नहीं बल्कि टुवर्ड्स द लेटरल साइड है, दैट फॉर्म्स अ स्पाइरल लिगामेंट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, सो नाउ यू हैव एन आइडिया व्हाट इज स्काला वेस्टिबुलाई एंड स्काला टिम्पेनाई। दे आर बेसिकली द कैविटीज फॉर्म्ड इन द कार्टिलेज व्हिच इज सराउंडिंग द कॉक्लियर डक्ट। तो ये दो स्काला बने हैं, टिम्पेनाई एंड वेस्टिबुलाई। द कॉक्लियर डक्ट इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द स्काला वेस्टिबुलाई by the vestibular membrane. So where is the scala vestibuli? This is the scala vestibuli. So here is the vestibular membrane. Okay, all right, आगे बात को बढ़ाते हैं। The lateral wall of the cochlear duct remains attached to the surrounding cartilage by the spiral ligament. So here the lateral wall is still attached to the cartilage, and this is what is known as the spiral ligament. तो हर वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। मॉड्यूलस में आपको बता चुका हूँ, बीच का पार्ट है। Initially, epithelial cells of the cochlear duct are all similar, they are alike. However, with further differentiation, what happens is they form two ridges, the inner ridge and the outer ridge. Okay, the outer ridge forms one row of inner and 3 or 4 rows of outer hair cells. They are covered by the tectorial membrane, and the sensory cells and the tectorial membrane together constitute the organ of Corti. So now you know what is an organ of Corti. Organ of Corti is basically a combination of several things. Organ of Corti is made up of the sensory cells as well as the tectorial membrane. Okay, now impulses received from this organ of Corti basically are transmitted to the spiral ganglion, and they are then transmitted to the nervous system by 8th nerve, cranial nerve 8. So here is the package. If you see here, these are the areas jahan pe messages receive honge, and then they travel it this way into the nerve. Okay, so far so good, all clear. This is further detailed structure showing you how the tectorial membrane and inner hair cells and outer hair cells, they are kind of making the organ of Corti. So that is the diagram which is actually showing you how the organ of Corti is working. And यहाँ पे जो cells हैं उनकी potential ये है कि they receive the sound waves and then transmit it to the nerve to be conducted to the nervous system. Okay, right. आगे बढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। So अब तक हमने जितनी बात की, that was all about the development of these cochlear duct and the surrounding cartilage and the organ of Corti. ठीक है, so we actually talked about the saccule, the cochlea and the organ of Corti. अब मुझे बात करनी है about semicircular canals, how are they developed. During the 6th week of the development, semicircular canals, आपको पता है there are 3 semicircular canals. They appear as flattened out pocketings of articular part of the aortic vesicle. बन सब कुछ aortic vesicle से ही रहा है। अच्छा, फिर मैं हमेशा एम्ब्रियोलॉजी में कहता हूँ कि हम ये सिर्फ बता रहे हैं कि इवेंट्स हो क्या रहे हैं। ये बना, ये आउट पॉकेजिंग हुई, ये प्लेकॉर्ड बना, ये वेसिकल बना, कैसे बना, nobody knows. है ना, मजे की चीज। So we actually don't understand how embryology actually happens. उसका कंट्रोल एक्चुअल क्या है, बट हमें सिर्फ ये पता है कि ये हुआ, कैसे हुआ we don't know. So the central portion of the wall of these outputting eventually, ये अब सारी कहानी ये है कि let me find the right diagram for you, this one. So here you see this is the auricular portion. ये basically aortic vesicle ही का पार्ट है। उसमें आप देखें ये इस तरह से कैविटीज और आउट पॉकेटिंग्स बनती हैं जिनको ये फिर फर्दर एनहांस होती हैं। सो you see एक सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरी सेमी सर्कुलर कैनाल, तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल, इसकी फर्दर जब डेवलपमेंट होती है तो इसमें एक डायलेटेड पोर्शन बनता है कैनाल का विच इज नोन एज क्रस एम्पुलरी, और एक नॉन डायलेटेड पोर्शन ट्यूब की तरह का होता है, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल प्रॉपर या क्रस नॉन एम्पुलरी। सो दिस इज नॉन एम्पुलरी, नो एम्पुला, इसमें कोई थिकनिंग नहीं है। सो देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वन सेमी सर्कुलर कैनाल, सेकंड सेमी सर्कुलर कैनाल एंड थर्ड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये इस तरह से डेवलप होती हैं बाय ग्रोथ ऑफ द सेल्स। इट्स अ सिंपल एम्ब्रियोलॉजिकल फिनोमेना जो कि बाकी भी ऑर्गन्स में हो रहा होता है इसी तरह। Central portion of the wall of these outpocketing eventually oppose each other and disappear while the 3 semicircular canals are developing, whereas one end of each canal dilates और वो क्रस एम्पुलरी कहलाता है, और जो नॉन डायलेटेड ट्यूब लाइक पार्ट होता है वो क्रस नॉन एम्पुलरी कहलाता है। Cells in the ampulla form a crest, the crista ampullaris, containing sensory cells for maintaining the equilibrium. So
this is the part of the semicircular canal which actually maintains your equilibrium. Similar sensory areas, the macula osticia, develop in the walls of the utricle and saccule. Now impulses all then travel into the cranial nerve 8. Okay. During the formation of the otic vesicle, a small group of cells break from its wall and form the statoacoustic ganglia. Now, other cells of this ganglia are derived from the neural crest cells, and the ganglia subsequently splits into cochlear and vestibular portions, which supply the sensory cells of organ of corti. So, ये ganglia cells भी बनते हैं all from, ये ganglia important है क्योंकि usually बहुत सारी body में हम देख रहे होते हैं जो ganglia origin है, that is from the neural crest cell only. लेकिन इस केस में it's the combination of neural crest cell as well as from the otic vesicle. So इस डायग्राम को अगर हम कहाँ थी वो डायग्राम स्टार्ट में that one. So इस otic vesicle से भी ये cells migrate कर एक ganglia बनाने में participate करते हैं. So there are cells from the otic vesicle and then there are cells from the neural crest cells. They combine to form this ganglia, which is important for receiving the impulses and transmitting them to the nerve, ताकि जो आवाज हमारे कानों तक साउंड वेव्स पहुंच रही हैं वो हम एक्चुअली सुन भी सकें. तो ये सारी कहानी थी इनर एयर से रिलेटेड. So that was all very important ना, ये वाला पार्ट आपके एयर का. So all the semicircular canals, all the cochlear portions, all these things. Now we will talk a little more about the middle ear. And the middle ear, you know, is more sort of conduction. तो इसमें काफी सारी bones हैं, Milius, incus, stapes, उनके बारे में पढ़ते हैं कि how is the middle ear developed. अब middle ear में there is a tympanic cavity and there is an auditory tube. The tympanic cavity, which originates in the endoderm, is derived from the first pharyngeal pouch. ये important बात है. This pouch expands in a lateral direction and distal part of the pouch, the tubo-tympanic recess, widen and give rise to the primitive tympanic cavity, which then further on expands further and forms the tympanic cavity proper. The proximal part remains narrow and forms the auditory tube, the eustachian tube, or basically if you look at this diagram, so you see this is the primitive tympanic cavity being formed from the first pharyngeal arch. फिर इसमें growth होगी and it will make the proper tympanic cavity as well as the eustachian tube. तो इस तरह से ये डेवलप होता है. It's a simple thing to understand कि there will be the first pharyngeal arch, उसका एक lateral extension होगा, initially the tubo-tympanic recess, which then forms, बड़ा हो गया, देखो ये जो गार है, ये सुराख है, ये बड़ा हो गया, it now forms the primitive tympanic cavity, and that's how it is made actually. Yeah. अब जो ossicles हैं यानी जो bones हैं, Milius और incus, अब आपको ना इनकी exact origin इस तरह पता होनी चाहिए कि first pharyngeal arch से कौन बना, second pharyngeal arch से कौन, ये एग्जाम में पूछते हैं. So the Milius incus जो हैं, they are formed and developed from the first pharyngeal arch. और जो stapes है, it is derived from the second arch. Although the ossicles appears during the first half of the fetal life, they remain embedded in mesenchyme until the 8th month, when the surrounding tissue dissolves. So इन bones में basically ये bones काम कैसे करती हैं, Milius incus steps जो ना, इनमें oscillations होती हैं. इनमें जब sound waves hit करती हैं, यानी ऐसे जब sound wave hit करेगी tympanic membrane और फिर ये bones हैं, तो they start vibrating, और इस vibration की वजह से ये सारा sound wave और depolarization मामला आगे बढ़ता है. अच्छा, इनकी vibration तब possible होगी कि जब इनके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं होगा, there will be a cavity, because अगर इसके इर्द गिर्द for example एक mesenchymal tissue है तो ये vibrate नहीं कर पाएंगी, और ऐसा ही होता है 8th month तक in bones के इर्द गिर्द there is a mesenchymal tissue, so they are unable to vibrate. लेकिन afterwards the mesenchymal tissue actually dissolves. The endodermal epithelial lining of the primitive tympanic cavity then extends along the wall of the newly developing space. The tympanic cavity is now at least twice as large as before. Obviously the cavity is enlarging, mesenchyme is going away, the bones are now alone, and when the ossicles are entirely free of the mesenchyme, the endodermal epithelium connects them like a mesentery-like fashion to the wall of the cavity. The supporting ligaments of the ossicles develop later within these mesenteries. So you got the overall concept. The overall concept is that ये जो bones हैं, Milius, incus और stapes, ये पहले सब कुछ भरी हुई होती हैं with the mesenchyme, और ये जो tympanic cavity है, ये kind of भरी हुई tympanic cavity होती है. It's not empty. लेकिन with the passage of time, this mesenchyme goes away, leaving behind these bones and only the covering. This is the endodermal epithelium of the tympanic cavity. Okay. Now, because the Milius is derived from the first pharyngeal arch, इसके जो associated muscles हैं, यानी कि tensor tympani, is also innervated by the mandibular branch of the trach. That's the rule of embryology.
जहां से जो चीज डेवलप होती है नर्व सप्लाई वहीं की रिटेन रहती है. Stapedius muscle, which is attached to the stapes, is innervated by the facial nerve, which is then the second pharyngeal arch key nerve. ठीक है? Now, during late fetal life, the tympanic cavity expands dorsally and vacuolization surrounding the tissue to form the tympanic antrum. After birth, the epithelium of the tympanic cavity invades the bone as well into the mastoid process, a process known as luminization, and this is very important for balance, for sound production, and for so many other things. Expansion of inflammation of the tympanic cavity can also affect the mastoid process because it extends up till there. Okay. Now the external ear. अब external ear जो है, so inner ear is all sensitive structures associated with the nervous system as well as the balance. Middle ear more sort of the bones and conduction of the sound vessels. अब आता है जनाब external. External ear का तो काम है to catch the signals. It's like an antenna. So there is an external auditory meatus जो आपके कान का बड़ा सा सुराख है. So that hole is the external auditory meatus जिसमें air enter होती है. It develops as an invagination of the first arch and not from the first pharyngeal cleft. पहले ये समझा जाता but it's from the arch actually. At the beginning of the third month, epithelial cells at the bottom of the meatus proliferate, forming the solid epithelial plate, the meatal plug. उसमें बाद में cavitization होती है and then there is a hole ताकि air अंदर enter हो सके. Then there is an eardrum or the tympanic membrane. It is made up of an ectodermal epithelial lining as well as an endodermal epithelial lining. क्योंकि जो tympanic membrane है उसका एक part है, if this is the, suppose this is the tympanic membrane, तो इसका एक part towards the inner side है, एक part towards the outer side है. So it is double kind of origin. It is an ectodermal part as well as an endodermal part. Okay, and then there is an intermediate layer of connective tissue as well. The major part of the eardrum is firmly attached to one of the bones of the middle ear, the malleus, उसके handle के साथ, and the remaining portion forms the separation between the external auditory meatus and the tympanic cavity. So, if you look at the ear, again मैंने आपसे कहा ना कि ear की anatomy आपको पता होगी तो ये बात समझ में आएगी. So here we have the external auditory meatus. यहाँ से sound waves आ रही हैं, इस drum पे hit कर रही हैं, drum से sound waves जा रही हैं towards the bones and then to the inner ear. Okay, that's how it works basically. ऑरिकल क्या है? ऑरिकल इस एक्सटेंडेड एंटीना पोर्शन को कहते हैं. आपका कान जो नजर आता है जो पकड़ के आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स खींचते हैं, मरोड़ते हैं, या समटाइम्स बाबू बेबी एक दूसरे के कान मोड़ तोड़ रहे होता है. सो दैट पोर्शन ऑफ योर ईयर इज द ऑरिकल. ओके, नाउ ऑरिकल और द एक्सटर्नल ईयर डेवलप्स फ्रॉम प्रोलिफरेशन ऑफ द टिश्यूज ड्राइव्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, द डॉर्सल एंड ऑफ द फर्स्ट एज वेल एज द सेकंड फेरेंजियल आर्चेस. इन चीजों से आपका ये कान बनता है, इसलिए इतना ब्यूटीफुल है. Proliferation, जहां कहीं neural crest cell आ जाए ना involved, that's a highly specialized stuff, and your ear is a beautiful highly specialized stuff. आपको पता है एक दफा अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए और किसी भी कॉन्ट्रैक्टस की वजह से, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्टिलेज की वजह से इसकी शेप डिरेंज हो जाए, there is no way on the earth possible कि इसको दोबारा आर्टिफिशियली बना सकें. इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है आपका ear. Can you imagine this? Now proliferation of the tissue from the second arch forms nearly all of the external ear, whereas the first arch contributes to the tragus and the external arch. So these are the fine details. कौन से part को क्या contribution मिल रहा है. Now the process involves molecular pathways regulating HOX-A2 expression, and there is some molecular details known. First arch tissues are HOX-A2 minus, whereas well, this is not important for you at the moment, so I would just simply skip it. Don't worry about it. Okay. So just remember the auricle is developed from the neural crest, first and second pharyngeal arches. Now the phenomenon of hearing. Actually, this is not directly associated with embryology because that comes under the physiology bit, और हम special senses की जब physiology करेंगे तो hearing की बात करेंगे. But anyways, it is dependent on the sound waves that cause vibration of the tympanic membrane, which is the eardrum, and then the vibration of the bones, and the bones transmit it to the internal ear. Once the tympanic membrane vibrates, it causes movement of the air ossicles, the malleus, incus, and the stapes. And they then serve to amplify the force of sound wave to transmit the pressure of the wave to the cochlea. Amplification results by two factors. Now this is a lot of physics, but anyways, let's have a look. The large size difference between the tympanic membrane, which is about 55 millimeters square, and the oval window, which is very small.
जहाँ पे स्टेप्स अटैच्ड है, तो इससे एक्चुअली सिग्नल एम्पलीफाई होता है। इसको सादा जबान में समझाऊं तो ये ऐसे है कि अगर एक पाइप इस डायमीटर का है, इसमें पानी आ रहा है और आगे चल के ये इस डायमीटर के पाइप में लिंक कर रहा है, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा वो बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलेगा, बिकॉज हियर वी हैव अ वाइड बोर पाइप एंड हियर वी हैव अ स्मॉल बोर पाइप। एज अ रिजल्ट देयर विल बी हाई प्रेशर, क्योंकि रेडियस कम हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी है कि एयर ड्रम हैज अ हायर रेडियस and then the bones are very small, so there is a like big amplification of sound waves. Okay, right. More than that, we study this in physiology, so not the topic here. Now, some of the clinical stuff: hearing loss and external ear abnormalities. There are congenital hearing losses, which may be due to abnormalities of the hair cells or development of the auditory nerve ganglia, or there can be problems in the external ear. So these are called conductive hearing loss. So अगर जो रियल ऑर्गन्स ऑफ हेयरिंग ट्रांसमिशन है, जैसे कि हेयर सेल्स हैं या नर्व एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, सो अगर वहां पे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड अ सेंसरी न्यूरल लॉस। और अगर एयर कंडक्शन का प्रॉब्लम है, यानी मियाटस ही बंद है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एयर मियाटस बंद है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये दो तरह के लॉसेस आपको पता होने चाहिए। दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद सम कंडीशंस सच एज प्रीनेटल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग रूबेला, CMV, cytomegalovirus, herpes simplex virus, all these things. Okay, the most common ear ossicle to be involved is basically the steps. Just remember the name, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं याद रखनी है। External ear defect. So you see here, this is no ear development. You see here, yeah. So and they are common. They include minor as well as severe abnormalities, and sometimes they are just not there. Sometimes they have a tag like this. Sometimes the external meatus is not fully formed. So there are different flavors of it. All of the frequently occurring chromosomal syndromes and most of the less common ones have ear abnormalities. So ear is one of the very commonly affected embryological stuff. Okay, pre-auricular appendages, यानी auricular के सामने appendages like this. Pre-auricular appendages and pits are skin tags and shallow depression, respectively, anterior to the ear, and they are also very common. They are usually indicative of some other chromosomal abnormalities as well. So if you see some patient, for example, with the absence of ear, external ear, or with a tag here, so think about some other chromosomal problems as well. Okay, so that's basically all about the development of ear. The bottom line is, first go study the anatomy of ear, and once you are comfortable with the anatomy of ear, then come back here, try to study the embryology, how those organs are developed. Okay, it's an important topic, exam में काफी पूछते हैं। So that's all about this chapter. आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा।